Biggest update is out. TCS NQT document submission mail is out, and there is written reconnect NQT. And what is this mail, and what are the main things you have to submit the documents? So see, if you are not watching this video, then document will be fail and you will never see the shortlisting mail or offer letter, because this is the last step. And one more thing, TCS NQT 2026 big update I want to tell you, that exam is going on. And one more thing I want to tell you, main thing about this thing. And one more thing, that IBM CIC off campus new mail is out. And what is this mail, I will tell you. First of all, I want to tell you that document submission TCS reconnect. See, Aadhaar card is compulsory, both side copy, mobile number must be linked with your Aadhaar card, ठीक है. PAN card is compulsory, ID proof, passport और electricity bill. This is for address verification. And यहाँ पे passport size photograph is compulsory. 10th marksheet, 12th marksheet, passing certificate, all diploma और provisional degree, graduation all semester plus provisional degree, separate PDF as per availability. Now how to make separate PDF? Suppose this is semester 1, ठीक है. So I will create one separate semester 1 PDF, another PDF for semester 2, another PDF for semester 3. Don't put like one semester, second semester, third semester in one page. Don't put in one PDF, just use a separate PDF, ठीक है. Post graduation all semester marksheet if applicable. Now if you are an experienced candidate, then joining letter and last 3 salary slip, experience certification, relieving letter, UN number is compulsory, EPFO statement is compulsory. If any medical condition if you have to attach that document also. Now in case of oversized document, suggest you provide a zipped file, include all the above document. Also please share detail in the format below. Now already told you कि if you creating like semester 1 another PDF, semester 2, then this will create the oversized document. So you have to convert it in the zip. और यहाँ पे zip में convert भी नहीं करना है. Use Canva, go to Canva, use PDFs, separate PDFs and put all PDF in the zip file. Also please share detail in the format below. Now यहाँ पे इस तरीके से का फॉर्मेट होना चाहिए. पासिंग ईयर, एक्सटेंशन, परसेंटेज, ठीक है. और यहाँ पे क्लास स्टैंडर्ड. अब यहाँ पे 10th 12th एंड ग्रेजुएशन मस्ट बी देयर. एंड फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट स्टार्ट डेट और एंड डेट मस्ट बी लाइक दिस, और रिमार्क्स मस्ट बी लाइक दिस. और गैप अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे ये देना है तुम्हें, ठीक है. तो दिस इज द फॉर्मेट यू हैव टू चूज. और अगर कोई ज्यादा ही बड़ी PDF हो रही है, देन कंप्रेस योर PDF विद अ फ्री कंप्रेसर वेबसाइट, सर्च ऑन गूगल एंड यूज इट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, TCS NQT बिग अपडेट वेरी इंपॉर्टेंट. TCS NQT 2026 hiring process has started, and we all know that 10th March is exam date, and many college have already received TCS forms via TPO. So hiring is active for 24, 25, 26 batch. We all know on campus, off campus both is running, and this is big off campus mega hiring with the many massive hiring is going on. मतलब बहुत बड़े लेवल पे हायरिंग हो रही है, बहुत लोगों को हायर किया जाएगा. Why this exam is important? Because 7 LPA, 9 LPA, 11 LPA and 12 LPA is the package for digital and prime role. Because main focus is digital and prime, but I want to tell you this document verification got for Ninja role. This is for Ninja role, and Pune location is there. So moving forward, now now understand each and everything. Competition is high because 3 batches are considered together. Now last 10 day reality, only 8 day remaining for preparation, ठीक है. Exam level can be hard to medium because there is not a easy level of question, because already you can check digital and prime is going on. तो यहाँ पे डायरेक्ट एडवांस लेवल का तुमको क्रैक करना ही पड़ेगा सेक्शन. स्पीड एक्यूरेसी विल डिसाइड सिलेक्शन, एंड प्रॉपर रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट देन लर्निंग न्यू टॉपिक्स. नाउ व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग, आई एम गिविंग यू द PDF जिसमें ये चीज़ें होंगी. टेक स्क्रीनशॉट. व्हाट यू मस्ट डू नाउ, कीप योर ईमेल, कॉलेज नोटिफिकेशन डेली, ठीक है. TPO से कॉन्टैक्ट में और फिल द TCS फॉर्म इमीडिएटली इफ रिसीव्ड. ज्वाइन द 2026 हायरिंग ग्रुप एंड ज्वाइन द 2026 हायरिंग ग्रुप ऑफ TCS. लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वेरी सुन आई एम क्रिएटिंग VSP चैनल, ठीक है. डोंट वरी, सेपरेट ग्रुप होगा जिसमें तुम इसमें मतलब मैसेज भी कर सकते हो, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो. डोंट वरी. Complete detailed practice revision, focus more on numerical ability, reasoning, verbal and basic coding logic. और यहाँ पे टाइम का बहुत ध्यान देना. टाइम मस्ट बी फाइनल बॉस, वी कैन से टाइम के रहते कर लोगे तो अच्छी बात है. फाइनल मोटिवेशन, डोंट पैनिक एंड इट मे बी टफ बट डोंट पैनिक. 8 day preparation can change everything. Prime digital role are achievable. Don't skip this hiring. So what I told you that I am providing you this PDF where aptitude, coding, TCS, data interpretation, or everything is there for online or offline assessment. ठीक है, जो भी है मोस्टली ऑफलाइन है. एंड फॉर आफ्टर इंटरव्यू प्रेपरेशन इज ऑल्सो देयर इन दैट PDF.
and HR question will be also there. And one more thing I want to tell you, project based question also will be there. And one more thing, that casual questions and managerial question will be also there. So don't worry, everything is in that one PDF. Aptitude round 1, round 2 interview, round 3 HR discussion, everything you will get to see in that one PDF. Don't go here and there, just check out that PDF. Now what I told you, that you have to be prepared for this, because this is going on a huge number of recruitment is there of employees. So don't worry. And this is for Ninja, I already told you this is for Ninja, and Pune location is there. So you have to keep in mind, here is the thing is that this will be tough. Why this will be tough? Because there is only digital and Ninja. You have to crack the advanced section, otherwise you will never get to see the digital or Ninja. Maybe if you did well in foundation और वहाँ पे Ninja की जरूरत हुई तो ये दे भी सकते हैं, बट अभी फोकस एडवांस सेक्शन को क्रैक करना है प्लस फाउंडेशन सेक्शन को. दैट्स इट. Now IBM CIC India, IBM has shortlisted your profile for the next stage selection process. As part of the next step, the test and interview will be conducted at the college premises as per detail mentioned below. Kindly read through the invitation mail below for the complete recruitment process. Do not reply on the mail. Now this is the report that the round is going on in Nagpur. ठीक है, महाराष्ट्र लोकेशन 9th और 10th मार्च. रिपोर्टिंग टाइम इज 8:30. सो यहाँ पे क्या होने वाला है, द टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी देयर. टेस्ट एंड इंटरव्यू, एंड दिस इज ऑफलाइन इंटरव्यू इज गोइंग ऑन. एंड कीप इन माइंड देयर विल बी द वेन्यू एंड टाइमिंग इज ऑल्सो देयर. यू हैव टू कंप्लीट इट. नाउ 9th March is on offline test will be there, and after you get the shortlisting mail, means if you clear successfully 9th March on offline assessment, then you will get to see the interview on the next day 10th March. ठीक है, ये ध्यान रखना, एक ही दिन बाद इंटरव्यू है इफ यू क्रैक द ऑफलाइन असेसमेंट. ठीक है, तो दिस इज द थिंग. इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन इजीली टेक, बट हर किसी को लोकेशन अलग मिलेगी, टाइमिंग विल बी डिफरेंट, लोकेशन विल बी डिफरेंट एंड डेट विल बी डिफरेंट. सो डोंट वरी, कीप योर आई ऑन द मेल. और इस तरीके का तुम देख सकते हो, सब्जेक्ट लाइन विल बी दिस, और इस एंट्री लेवल हायरिंग की तरफ से आया होगा. तो एक बार जाके देख लो 4 days ago. मैनी पीपल गेटिंग टुडे ऑल्सो. सो डोंट वरी, दे आर सेंडिंग द मेल ऑन द स्लॉट और फेज वाइज. तो जाके देख लो सब्जेक्ट लाइन, और इस मेल से आ रहा है तुम्हें. डू चेक स्पैम फोल्डर और इनबॉक्स. और ये भी तुमको TCS का ऑफिशियल मेल आ रहा है. डू चेक योर स्पैम फोल्डर एंड इनबॉक्स ऑल्सो. एंड प्लीज वन मोर थिंग, don't waste your time, just check out that PDF. I am very soon uploading that PDF. ठीक है, now what you have to do, like this video, share with friends and subscribe for verified TCS updates, and comment your batch and college. Now only TCS, not IBM also, there many more is there. Now I am uploading Accenture one video, and there is already written that no under consideration. And one more thing, interview completed. What is this? Because application just changing again and again. So I am uploading that video very soon. Just comment down if you're having any query about Accenture. I will take your queries and create one video. So like this video, do subscribe my channel. Thanks for watching.